students, a very good morning to all of you. Here is Varsha Upadhyay. I hope you all are well. In previous class, we have discussed choose the correct answer of this chapter, and today we will discuss fill in the blanks, answer the following question and take the correct statement. So students, let's start. First of all, we will complete fill in the blanks. So first question is shortcut key to insert a blank presentation is. शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन इज ब्लैंक. तो ब्लैंक की जगह पे हम क्या फिल करेंगे? कंट्रोल प्लस एन. ओके, वी विल फिल कंट्रोल प्लस एन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिफॉल्ट MS PowerPoint 2013 सेव और फाइल विथ ब्लैंक एक्सटेंशन. करेगी MS PowerPoint 2013 में हम फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? एंड इट्स आंसर इज PPTX. We will fill here PPTX. Third question is shortcut key to run the slideshow from current slide is. हमें जब किसी स्लाइड को करंट स्लाइड को जब हमें किसी स्लाइड में क्या करना रहता है? रन करना रहता है. तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा? C+F5. ओके, शॉर्टकट की टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड इज ब्लैंक. तो ब्लैंक की जगह पे वी विल फिल C+F5. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज द स्टेटस द ब्लैंक डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट करेंट स्लाइड नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स, व्यू बटन एंड जूम स्लाइड्स, एंड वी विल फिल हियर अ स्टेटस बार. Fifth question is the blank slide layout doesn't contain any placeholder to type in. The blank layout doesn't contain any placeholder to type in. तो blank के जगह पे हम क्या fill करेंगे? Then we will fill here blank slide. Okay, I repeat it. Okay students, then we will discuss answer the following question. And our first question is what is presentation? What is presentation? And its answer is a presentation represents the data on slides having graphics and sound effects. I repeat it. A presentation represents the data on slides having graphics and sound effects. And next question is what is the use of slideshow tool in PowerPoint? What is the use of slideshow tool in PowerPoint? And its answer is slideshow tool in PowerPoint is used to display the presentation on or from your computer. Slideshow tool in PowerPoint is used to display the presentation on or from your computer. And the third question is what is a slide layout in PowerPoint? What is a slide layout in PowerPoint? And its answer is the slide layout in PowerPoint is the arrangement of all the items that prepare a slide. The slide layout in PowerPoint is the arrangement of all the items that prepare a slide. Okay. And the fourth question is how can we delete a slide in a presentation? How can we delete a slide in a presentation? And its answer is we click on the desired slide and press delete key on the keyboard. We click on the desired slide and press delete key on the keyboard. And the fifth question is how can we close a presentation? How can we close a presentation? And its answer is the steps to close the presentation are. इसका स्टेप जो होता है प्रेजेंटेशन को क्लोज करने का, वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल टैब एंड क्लोज ऑप्शन. फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हम क्लोज ऑप्शन में जाएंगे और फिर प्रेजेंटेशन क्या होगा? हमारा क्लोज हो जाएगा. ठीक है. And the D question number is tick the correct statement and cross out the wrong one. So first question is slide area displays the thumbnails of slides in presentation. Slide area displays the thumbnails of slides in a presentation. It's wrong, so we will put here wrong. Second question is a theme is a predefined combination of colors, font and effect.
A theme is a predefined combination of colors, font and effects. It's true. So we put here tick the correct. Third, the ribbon contains tabs like home, insert, design, transition, etc. The ribbon contains tabs like home, insert, design, transition, etc. It is also correct. So we will put here tick the correct. Next question, fourth is we can insert text box on the slides to insert the text. We can insert text box on the slides to insert the text. It is also true. Okay, so we will pick the correct. Next 5, we cannot delete useless slides from a presentation. ऐसा तो है नहीं कि हम लोग प्रेजेंटेशन से यूजलेस स्लाइड्स को डिलीट नहीं कर सकते हैं. देन दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, सो वी विल टिक हियर रॉन्ग. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ यू विल कंप्लीट योर फेयर. ओके, आप लोग अपना फेयर कंप्लीट कर लेंगे और इसे नोटबुक पे कॉपी कर लेंगे, लिख लेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. Stay home, stay safe.